है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। दिस इज स्कैपुलर रीजन। सबसे पहले दिस इज डेल्टॉइड, this one is pectoralis major. When we reflect it, this is pectoralis minor muscle. The pectoralis minor muscle plus the coracobrachialis, this one, and the short head of biceps. All three are inserted into the coracoid process of scapula. फिर ये जो है हमारे पास ये है long head of biceps. The two heads they combine into the belly of the biceps, जो नीचे जाके बनती है bicipital aponeurosis. If we reflect it, the muscle that we see is brachialis. ठीक हो गया? Now this one is the median nerve. If we trace it upwards, इसके दो roots हैं. This is the lateral root and this is the median root. The lateral root gives off another branch which is called the musculocutaneous nerve. This one, the musculocutaneous nerve, pierces the coracobrachialis muscle and goes down, runs between biceps and brachialis here, and then if we trace it downwards, it is continued down as the lateral cutaneous nerve of forearm. Acha. The medial root of median nerve gives another nerve which is called the ulnar nerve. This one is the ulnar nerve which goes down deep here behind the medial epicondyle of the humerus. ठीक हो गया? अब we are left with posterior cord. We will trace the radial nerve. How do we know that this is the radial nerve? It is going deep inside the posterior compartment of arm, and it is accompanied by profunda brachii muscles. The radial nerve, if we trace it upwards, it is originating from the posterior cord of brachial plexus, which is also giving the axillary nerve. This is axillary nerve, which is going laterally and winding around the surgical neck of the humerus here. This muscle here is latissimus dorsi. This is subscapularis. This is cephalic vein. The lateral superficial vein is cephalic vein, and the medial superficial vein is the basilic vein. ठीक है? This is brachial artery. This is brachial artery. ठीक है? If you trace it upwards, it is axillary artery in this area, and it is continued down into this. ठीक है? It is continuation of this brachial artery here. Now coming down, this muscle is pronator teres. Pronator teres is forming the medial boundary, and the brachioradialis is forming the lateral boundary of cubital fossa. And the superior boundary is formed by a line joining the two epicondyles of the humerus. The contents of cubital fossa are MBBR starting from the medial to the lateral side, median nerve, medialmost, then the brachial artery, then bicipital aponeurosis or the tendon of biceps muscle, and finally the radial nerve, which is not visible here. Now coming down to the forearm, this muscle is brachioradialis. अगर देखें तो this is flexor carpi radialis, this is palmaris longus, and this is flexor carpi ulnaris. Just if you are looking for a muscle, just look at the belly. ठीक है? टेंडन को ट्रेस बैक करो एंड लुक एट द बेली. ये बेली है, नीचे जाके वो एक पतला टेंडन बच जाता है. ठीक हो गया? So the three superficial flexors are flexor carpi radialis, palmaris longus, and flexor carpi ulnaris. If we reflect them, we see flexor digitorum superficialis के tendons. ठीक है? If you further reflect it, we see the flexor digitorum profundus. ठीक? और this is ulnar artery. इधर. This is ulnar artery, and this is ulnar nerve. Okay? And this is radial artery. If we trace ulnar artery and the radial artery upwards, they are originating from, they are at the terminal branches of the brachial artery here. Okay? This muscle here is abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. Okay? And extensor pollicis longus ये जा रहा है जो कि वहाँ से नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से ये वाला है, ये वाला. ठीक हो गया? This one. So abductor pollicis longus, ये है abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris. और अगर हम
एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस के ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास दो मसल्स हैं. इसका टेंडन है, दिस इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड दिस इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस. दोबारा बताती हूँ. हमने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कर लिया, समझ आ गई. एक्सटेंसर कंपार्टमेंट करते हैं. सबसे ऊपर तो ब्रेकियोरेडियालिस था, उससे हटा दिया. अब इसके आगे हमें एक टेंडन नजर आ रहा है और उसके नीचे एक बेली वाला भी नजर आ रहा है. दोनों मसल्स हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस. एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन्स, देन एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ये जो पीछे है. ठीक है, दिस इज एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस. ये वाला है एक्सटेंसर इंडिसिस, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम, दिस इज एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड दिस इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस. एक दफ़ा दोबारा बताओ. और ये वाला बीच में जो है ये क्या है, सुपिनेटर. डीप ठीक हो गया. मीडियल और ये जो है ये ट्राइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स की हेड्स है. ठीक है मैम सुपिनेटर को